semester and welcome back to the channel. So आज मैं नहीं कि botany honors पिला मानक पाई 4th semester रो CORE-8 that means molecular biology रो most important probable questions, long questions, short questions, each and every type of questions मैं नहीं कि and मैं जहाँ भी selection question दिए सबू exam रे आसे ही आसे सही थी पाई मु समस्त अंकर syllabus को easy करिया पाई पाठ को easy करिया पाई selection question नहीं कि बस सेतिकी question ऊपर आपण focus करंतु 90% रहिबो ही रहिबो एंड यस खाता पेन बाहर करंतु लिखि रखंतु मु कोन कोन क्वेश्चन कहूची सिलेबस जते पाखरे नाही ताले समस्त को सिलेबस स्क्रीन ने डिस्प्ले होउतबो ताको स्क्रीनशॉट करि रखंतु सिलेबस लिखंतु एंड जो जो क्वेश्चन कहूची ताको मध्ये लिखि रखंतु जते बेले प्रैक्टिस करिवे सपोज गोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कले प्रैक्टिस कर साला परे ताको साइड रे टिक मार देबे जतेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवे सेतेटा क्वेश्चन ऊपर टिक मारी मारी जिवे दोदरा कि आपनकर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ी जिवो एंड वंस आपण एमिते करिवे माने एग्जाम आसिला बेले को आपनकर गोटे रु दिथर रिवीजन मध्ये हे जिवो फुल ऑन कॉन्फिडेंस पळे आसीबा जे मु एग्जाम रे 90% मिनिमम सिक्योर करि ही देबी सो सेहिति पय मु बारंबार कुहे नोट्स पाखरे रखंतु आ जत्ते भी मु सिलेक्शन क्वेश्चन कहूची ताको सब लिखि रखंतु सुनी देले हबनी लिखिबा निहाती भाबर दरकार सो पेन एंड पेपर बाहर करंतु लिखि रखंतु एंड यस जदि आज रो वीडियो भल लागिबा ताले प्लीज लाइक कर देबे जत्ते भी संग माने अछंती ओडिसा रे आपण मानकर बॉटनी ऑनर्स रे CORE-8 एग्जाम दोउचंती से मानको समस्त को शेयर करंतु एंड जो माने वर्तमान सुधा चैनल सब्सक्राइब करनांते प्लीज सब्सक्राइब करंतु एंड यस टेलीग्राम चैनल पीएम बायोपेशन एकेडमी को सर्च करंतु जॉइन करंतु ऑलरेडी CORE-8 9 10 नो नोट्स अपलोड हे सारिची सो प्लीज जाके जॉइन करंतु एंड नोट्स मध्ये डाउनलोड करंतु ताले स्टार्ट करबा हमर इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क क्वेश्चन नु फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट प्रूव दैट DNA as a genetic material or carrier of genetic information from Griffith's experiment or Griffiths and Avery experiment or Hershey and Chase experiment. आउ थे क्वेश्चन डाकी रखुची लिखि रखंतु प्रूफ दैट DNA as a genetic material or carrier of genetic information from Griffiths and Avery experiment or Hershey and Chase experiment. Number 2 question, very important. Prove RNA as a genetic material. Prove RNA as a genetic material in some viruses from Frankel and Carnot's experiment. Frankel and Carnot's experiment. Next long question. Discuss the Watson model of DNA double helix structure. This is also very important long question. Discuss the Watson model of DNA double helix structure. Next long question. This is not very important. बट ये लॉन्ग क्वेश्चन मध्य हेई परिबो सो एटा गोटे लेस इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे हम कंसीडर करबा लेस इंपोर्टेंट माने तामान नुह कि हम ए क्वेश्चन को टोटल ओमिट कर देबा पढिबा ही नहीं ना जहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रोचे ता ऊपर हमें बेसी फोकस करबा ताको हमें बेसी प्रैक्टिस करबा जे टिके लेस इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रोचे ताको हमें टिके कम फोकस करबा काहे ना हम बारंबार कहि चलछि जे कोविड टाइम रे एग्जाम बहुत फ्लेक्सिबल थिला ऑनलाइन एग्जाम चलथिला सो क्वेश्चन पूरा इजी आस्तुला एबे कोविड परे परे आपण माने गोटे एग्जाम देथिबे देखुथिबे क्वेश्चन को लेवल ला आछि बिल्कुल भी सेतेटा इजी क्वेश्चन आसुनी सो सेथि पई मु को टाइप रो लॉन्ग क्वेश्चन हेई परिबो कोटा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कोटा लेस इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ता मु कहि रखुची सो जोटा भी मु लेस इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कहूची मे बी सेटा एग्जाम रे लॉन्ग क्वेश्चन आसी पारे सेथि पई मु याको लेस इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कहूची सो एथि पई आपण को छाडी देबेनी प्रैक्टिस करिवे किंतु ता ऊपर टिके कम फोकस पकेबे जदी एग्जाम रे एटा लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे आसुची एंड ता और रे जो क्वेश्चन आसी आपण जदी न आसुतबो ताले आपण को अटेम्प्ट करि परिवे ओके तो लिखंतो 4 नंबर क्वेश्चन व्हाट आर न्यूक्लियोसोम व्हाट आर न्यूक्लियोसोम डिस्कस the structure or molecular organization of structure or molecular organization of chromatin with special reference to euchromatin and heterochromatin. Next number 5 question. Give the mechanism of semi-conservative method of DNA replication. This is a very easy and very important.
Give the mechanism of semi-conservative method of DNA replication. Next, this is also important question. What is transcription? Discuss mechanisms of transcription in prokaryotes. Next important long question. What is operon concept? Discuss the operon model for lactose metabolism or lack operon and tryptophan synthesis or TRP operon in E. coli. Next, this is also important question. What is translation? Discuss various steps in translation. ए क्वेश्चन टिके मॉडिफाई होके केमती आसी पारे पचारि दबो कि व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस जेमते ट्रांसक्रिप्शन को आउ कोन पचारि दे पारे व्हाट इज एमआरएनए सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन माने कोन प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए तो क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन न पचार कि एमिति मध्य पचार दे पारे व्हाट इज एमआरएनए सिंथेसिस डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और डिस्कस द स्टेप्स ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस ठीक सेमती ट्रांसलेशन को मध्य अदरवाइज कोन पचार दे पारिबा ट्रांसलेशन को हमें कोन कहउचंती ना प्रोटीन सिंथेसिस बोली कहउचंती एमआरएनए रो प्रोटीन सिंथेसिस होची सो डायरेक्ट ट्रांसलेशन न पचार कि एमिति मध्य क्वेश्चन आस पारे व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस डिस्कस अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस कोन स्टेप्स रहिची इनिशिएशन रही प्रथम चेन इनिशिएशन हम देन एलोंगेशन हम देन टर्मिनेशन हम ट्रांसक्रिप्शन ने भी सेम जिनस रही ट्रांसलेशन ने भी सेम जिनस रही बस डिफरेंस कौन ट्रांसक्रिप्शन माने होची प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए एंड ट्रांसलेशन माने होची प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ओके नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट आर राइबोसोम्स discuss its structure and assembly. Next, what is central dogma and genetic code? Discuss the salient features of genetic code with deciphering. Next, this is less important long question. What are split genes? Discuss about splicing and spliceosomal machinery and various splicing pathways. Next, most important long question. Define splicing. स्प्लाइसिंग कौन हुए आरएनए रे हुए सो आरएनए स्प्लाइसिंग कौन आइदर स्प्लाइसिंग पचारि पारे किंबा आरएनए स्प्लाइसिंग मध्य पचारि पारे डिफाइन स्प्लाइसिंग गिव द मेकानिज्म ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग नेक्स्ट लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय एमआरएनए प्रोसेसिंग Discuss briefly mRNA processing in eukaryotes. ओके तो मैक्सिमम आमर केतेटा लॉन्ग क्वेश्चन रोचे 12 ରୁ 13टा लॉन्ग क्वेश्चन रोचे बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं अरे यार आम 4टा यूनिट पढ़ा माने गोटे यूनिट रू आम मिनिमम 3टा तो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा ना ना आम केमती करवा गोटे यूनिट रू 2टा लॉन्ग क्वेश्चन आमको एग्जाम रे दिया हबा और करके जदि आम 3टा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी थिबा प्रिपेयर हेइथिबा ताहाले जांकि सिना आम गोटे अटेम्प्ट करि परिबा जदि आम 2टा ही पढ़ी जाइथिबा किंतु से कुआडु कुआडु टिके बुलेकी पके देबा आम करि परिबे सेति मिनिमम क्वेश्चन मु दउची जतिके मोस्ट इंपोर्टेंट आ जदि भी क्वेश्चन बुलेकी आसे फिर भी आपण माने समस्त करि परिबे सेइथि पई मु जेते कम क्वेश्चन हेइ परिबा सेते कम क्वेश्चन दउची जो गुडा को बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेतिक देची एंड प्लीज रिक्वेस्ट करूची या भितरु आउ सिलेक्शन करके पढ़िबेनी अदरवाइज 60% ऊपर को भी रखि परिबेनी काहेकि ना टोटल 4टा बड़ बड़ यूनिट रहउची आपनकर ता भितरु मु 13टा क्वेश्चन देची 12टा ରୁ 13टा क्वेश्चन मु मैक्सिमम देची
जदि आम डिवाइड भी करुँच पर पेपर 3टा लेखाएं आम लंग क्वेश्चन आतिक टिके तो मेहनत करने को पड़ो गोटे पेपर मिनिमम 3टा लंग क्वेश्चन जब प्रिपेयर हो आराम से सर्ट नोट सब हो सर्ट नोट में बेसी आपको फोकस करने को पड़ोनी सो लंग क्वेश्चन जिते भल से कॉन्सेप्ट बुझिके प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम से सुपर हम एंड येस ट्राए करेंगे जो थे डायग्राम अच्छी प्लीज समस्ते डायग्राम करेंगे डायग्राम को जमा भी ओमिट करेंगे एत भल डायग्राम करने दरकार नहीं पेन रे डायग्राम हेले भी चलो जब टाइम होनी पेनसिल करने को पेन रे कले भी चलो बास डबल इंक यूज करेंगे नहीं ब्लू इंक कि ब्लैक इंक यूज करेंगे गोटे ही इंक यूज करेंगे एंड येस जदि डायग्राम करुँच साइड रे मेंशन करंतु को पार्ट्स तार अच्छी मेंशन करंतु एंड तले डायग्राम रो ना लिखंतु लेबलिंग करबा एंड डायग्राम रो ना को मेंशन करबा बहुत इंपोर्टेंट आमे गोटे सेठी आर्टिस्ट टाइप रो डायग्राम करना जे हम डायग्राम देखि जने बुझी जबा अरे पिलाटा ए डायग्राम करछि बोली ना आमे जहाँ डायग्राम करछन्ते सेटा रफ डायग्राम हम आमे बसिकी डायग्राम करबा पे हम पाखरे समय नहीं एग्जाम रे सो जो भी डायग्राम करुँच तार पार्ट्स को लेबलिंग करंतु जे एटा ए पार्ट एटा ए पार्ट एटा ए पार्ट एंड ये सब बेले राइट साइड रे ही लेबलिंग करेंगे एपट सेपट करके लेबलिंग करेंगे आखि को सुंदर देखा जाएनी सो डायग्राम करेंगे राइट साइड रे लेबलिंग करेंगे एंड तले तार ना जमीती भी हो मेंशन करेंगे कौन करिसेंती को डायग्राम करिसेंती ताको मेंशन करेंगे जो थे डायग्राम नाही इट्स ओके ताको भल से पढ़ी थ्योरी ट्राए करेंगे लिखापी हेडिंग भल से देवे हैंड रईटिंग भल हेनी के भी एग्जाम रे कारण बहुत कम समय भितर आम बहुत किसी जिनस आम लिखुं तो हैंड रईटिंग भल हेनी किंतु ट्राए करेंगे स्पेस मेंटेन करने वार्ड वार्ड भितर प्रॉपर स्पेस देवे लाइन लाइन भितर प्रॉपर स्पेस देवे जो द्वारा कि आप अक्षर जिते कदर्ज करके लिखिले भी पढ़ी हम गोटे जिनस यदि पढ़ी होती आराम से मार्क देदेवे जब पढ़ी हेनी गिंजी गंजी करके लिखिथे ना पढ़ी हेनी जब मार्क भी दे हेनी ठीक अच्छे सो गैप मेंटेन करेंगे डायग्राम करेंगे क्वेश्चन नंबर भल से देवे एंड ट्राए करेंगे सीरियली करने जदि आप सीरियली न करेंगे खाता जी देखिए से चिड़चिड़ हो जदि फास्ट इंप्रेशन खराब हो गला ताले मार्क भी भल से देवेनि जिते भल लिखिले भी मार्क भल आसबनी सो सब बेले सीरियली करने को ट्राए करेंगे जदि आप लंग क्वेश्चन फास्ट स्टार्ट करछंती देन लंग क्वेश्चन रु स्टार्ट करते एमती नहीं कि लास्ट लंग क्वेश्चन आगे करेंगे देन फास्ट लंग क्वेश्चन आगे करेंगे ना जदि लंग क्वेश्चन करछंती सीरियली लंग क्वेश्चन करंतु देन जदि 2 मार्क्स करछंती सीरियली ए रु लास्ट जाए करंतु एमती नहीं कि आगे एफ करदेवे तापरे ई करदेवे तापरे बी करदेवे तापरे सी करदेवे लास्ट को ए करदेवे ना सेमती करंतुनी सीरियली करंतु सीरियली कले गोटे भल इंप्रेशन आसीबो आपनका खाताटा भल सुंदर देखा जिवो एंड भितरु गोटे इनर फीलिंग आसो कि पिलाटा को बहुत भल से आसी एग्जामटा भल से देइछि अटेम्प्ट करछि एमती नहीं कि खामखियाली एग्जाम देइछि गोटे पिला सो एग्जाम रे भल मार्क मध्य रहइबो ठीक अच्छे लंग क्वेश्चन पार्ट आम कवर करदे आई होप समस्त लंग क्वेश्चन क्लीयर हो जाए सिलेबस देखिए लिखि रखु कौन कौन लंग क्वेश्चन रोचे देन आम जा शॉर्ट नोट पार्ट को शॉर्ट नोट रे कौन कौन रही 3 मार्किया शॉर्ट नोट प्रथम देखा देन जा 1.5 एंड 2 मार्क्स को शॉर्ट नोट मु 20टा शॉर्ट नोट कहि 3 मार्क तारी भितर श्योर एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो लिखंतु फास्ट शॉर्ट नोट स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए फास्ट लिखिबे देन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डीएनए जदि लिखिपार ना ताले वीडियो टिके बैक करके लिखि दियंतु नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम नेक्स्ट यूक्रोमाटिन नेक्स्ट रोलिंग सर्कल मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आउ थरे कहि रखुची रोलिंग सर्कल मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नेक्स्ट रेप्लिकेशन ऑफ द 5' एंड ऑफ linear chromosome or telomere replication. Next, adapter hypothesis of central dogma. Adapter hypothesis of central dogma. Next, genetic code. Next, ribozymes. Next, RNA editing. हाँ ये गोटे कथा कही रखुची जदि जेनेटिक कोड एग्जाम रे शॉर्ट नोट आसूची ताले जो बॉक्स रही जो पूरा पूरी आमर कोडन जो बॉक्स रही 64टा कोडन बॉक्स से बॉक्स को ट्राए करेंगे करने बहुत ट्रिकी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नुह बस जमती आम जेनेटिक्स करती ना क्रॉस करके ठीक सेमती ये क्रॉस करके आराम से आप 64 कोडन बनईदेवे और से बॉक्सटा यदि करेंगे बहुत इम्प्रेसिव कहीं गोटे 0.5 नंबर भी काटि पारे जेनेटिक कोड्रे तो ट्राए करेंगे जेनेटिक कोड्रे जहाँ भी थ्योरी लिखु से बॉक्सटा जमीती हेले भी करेंगे ओके नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नेक्स्ट transcription factors in prokaryotes next gene silencing next
ribosome structure. Next, changing of tRNA. Next, amino acyl tRNA synthesis. Amino acyl tRNA synthesis. Next, post-transcriptional modification of proteins. Post-transcriptional modification of proteins. Next, CORT curve. Next, enzymes involved in DNA. Enzymes involved in DNA replication. Next, mRNA transportation or mRNA transport. Okay, 3 मार्किया शॉर्ट नोट कहीदेली. एबे जिमा आपर नेक्स्ट 1.5 और 2 मार्क शॉर्ट नोट को जहाँ भी मु 3 मार्क शॉर्ट नोट कहली लॉन्ग क्वेश्चन कहली जदि आप कॉन्सेप्ट बुझिकी भल से पूरा पढ़ी थे लॉन्ग क्वेश्चन को ताले किछि शॉर्ट नोट एमती गोटे आसबनी जोटा आपको आसबनी सबू शॉर्ट नोट आसब जहाँ भी एग्जाम पढ़ी सबू आसब मे भी गोटे दीटा न आसी पारे बाकी सबू आसब. तो ताले लिखि देखो क्वेश्चन कौन कौन बहुत गुड़ाए पूरा बीट बाय बीट क्वेश्चन मु कहूँ ताकि जो टाइप रो भी क्वेश्चन आसब आप बिल्कुल भी डरबेनी सबू क्वेश्चन आपन को आसला भाया मु सबू क्वेश्चन दे देछि. मिनिमम 60 to 70 शॉर्ट क्वेश्चन मु डाकिबी एंड से क्वेश्चन गुड़ाक आप लिखला बेलू भी भावे जब पढ़ी थे ताले भावे जे क्वेश्चन केते इजी. बस लिखि रखु स्टार्ट करूँ शीघ्र शीघ्र लिखा. क्वेश्चन नंबर 1 1.5 एंड 2 मार्क्स पाई. व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? नेक्स्ट, define genetic material. Define genetic material and write down the type of genetic material. Next, Chargaff's rule. Chargaff's rule. Next, what are the indirect evidence of DNA as a genetic material? Next, what is ZDNA? ZDNA. Next, what is denaturation of DNA? Next, renaturation of DNA. Next, what is the difference between denaturation and renaturation and how it occurs? What is the difference between denaturation and renaturation and how it occurs? Next, CORT curves. Next, write down the feature of mtDNA or cpDNA. Next, function of DNA. Next, what are RNA? And write down the different types of RNA. Next, write the structure and function of tRNA. Next, what is snRNA? What is snRNA? Write its function. Next, what are histone proteins? What are histone proteins? Name different histone protein. Next, what is nucleosome? Next, what is chromatin? Write down the molecular organization of chromatin. Next, euchromatin and its function. Next, heterochromatin and its function. Next, nucleotides and nucleosides. Nucleotides versus nucleosides. Next, give the structural component of nucleotide. Give the structural component of nucleotide. Next, nitrogenous base. Next, what are the types of nitrogenous base? Next, what is semi-conservative type of DNA replication? Next, RNA priming or RNA primer. Next, define DNA replication. Next, what are the enzymes? What are the enzymes involved in DNA replication? Next, what is theta mode of replication of DNA? Next, what is DNA polymerase 3? Write down its function.
Next, what is the function of DNA helicase? What is the function of DNA helicase? Next, what is central dogma in molecular biology? Next, what is adapter hypothesis? Next, genetic code. Next, write the properties of genetic code. Next, what is transcription? Next, what is transcription unit? And mention its component. Next, RNA polymerase. Next, how many types of RNA polymerase are there? How many types of RNA polymerase are there? Next, very interesting, टाटा बॉक्स आइदर एग्जाम रे टाटा बॉक्स पकई पारे किंबा TATAG बॉक्स मध्य लिखि पारे टाटा बॉक्स जहाँ TATAG बॉक्स मध्य से सो कंफ्यूज जमा भी हेबेनी. नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फीचर्स इन प्रोकैरियोट्स. नेक्स्ट, डिफाइन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन? डीएनए रु एमआरएनए हवा को आम ट्रांसक्रिप्शन बोली कहते तो बस एमआरएनए रु डीएनए फॉर्मेशन हवा को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते. बस एमती गोटे आरो मार्क जमी केमिस्ट्री आप लिखुंट रिएक्टेंट देन प्रोडक्ट आरो मार्क दौरान ठीक सेमती ये सेमतिका गोटे आरो मार्क कर गोटे रिएक्शन देखेदेवे जे एमआरएनए रु डीएनए फॉर्मेशन हवा को आम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोली कहते एंड ता विषय में गोटे लाइन थ्योरी लिखिदेवे. दैट्स इट. 1.5 to 2 मार्क्स भितर एतिकी ही दरकार. नेक्स्ट, व्हाट इज स्प्लिट जीन. नेक्स्ट, what is splicing? Next, exon versus intron. Next, DNA versus RNA. Next, what is spliceosome machinery? Next, what are group 1 and group 2 introns? Next, alternative splicing. Next, tRNA splicing. Next, what is ribozyme and its function? Next, what is exon shuffling? Very important. What is exon shuffling? Next, what is RNA editing? Next, 5' cap addition in RNA. Next, polyadenylation. Next, what do you mean by operon? Next, lac operon. Next, tryptophan operon. Next, what do you mean by steroids and peptide hormone? Give examples. What do you mean by steroids and peptide hormone? Give example. Define gene silencing. What is ribosome? What is ribosome? Write its structure and function. Next, what is amino acyl tRNA synthesis? Amino acyl tRNA synthesis. Next, what do you mean by fidelity of translation? Next, inhibitors of protein synthesis. Inhibitor of protein synthesis. Inhibitor माने जे इनहिबिट करती रोकती. बर्तमान आपण मैंने कॉलेज आसुँच मुझे रोकबी तो मुझे कौन कली मु इनहिबिट कली रोकबारे हेल्प करी. सेमती प्रोटीन सिंथेसिस रे एमती को मैंने अच्छा जो मैंने कि इनहिबिटर हिसाब रे काम करती प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती बा इनहिबिशन करती. एंड से फैक्टर माने कौन कौन ताको आम कहते इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स आर प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट, व्हाट आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन. पोस्ट ट्रांसलेशनल. What are the post-translational modification of protein? Next, very important, transcription bubble. Next, proofreading of DNA. Next, degeneracy of genetic code. जेनेटिक कोड जो फीचर सब रही सी गोटे गोटे शॉर्ट नोट माने 1.5 and 2 मार्क्स शॉर्ट नोट जमती कि कहले डिजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड. नेक्स्ट,
Function of sigma factor in prokaryotes. Next, write a note on mRNA transport. Next, RNA capping. Next, what do you mean by reconstituted virus? Next, what are housekeeping genes? This is very, very important. What are housekeeping genes? Next, what are structural genes? What are structural genes? Next, bDNA versus zDNA. Next, euchromatin versus heterochromatin. Next, what are 70S and 80S ribosomes? Next, difference between leading strand and lagging strand. Next, difference between prokaryotic DNA and eukaryotic DNA. What are inducible operon and repressible operon? What are inducible operon and repressible operon? Next, difference between replication and translation. Next, operator. And last, promoter gene. Promoter gene. आई होप कि समस्ते बहुत भल भाव में लिखिदे क्वेश्चन जदि कई क्वेश्चन छाड़ी जाते प्लीज बैक करके वीडियो को लिखि रखु एंड यस आज मुझे भी क्वेश्चन कही एग्जाम में थुआ होता क्वेश्चन आपण मैंने जातु एग्जाम दिंतु आसिकी टेलीग्राम चैनल कमेंट करूँ आपंकर केती क्वेश्चन आसी सो देखिए मु ग्यारंटी दे कहूँ 98% क्वेश्चन आसी ही आसी बस 1 to 2% क्वेश्चन मे भी बुक भितर किसी किसी जगह पकई देथिबो सो से चिंता करबा बिल्कुल दरकार नहीं ऑप्शन दिया होची हमको आमे करि परिबा नो डाउट आमे जदि भल से कॉन्सेप्ट क्लियर होइतिबा क्वेश्चन जोटो भी आसु आमे आराम से करि परिबा एतिके होची कॉमन क्वेश्चन आमे जदि याको सॉल्व को दोचंती हमर 90% ऊपर को रहिबो ही रहिबो ता तळ को रहिबो ही नाही एंड यस मु सब बेले कोहे कॉन्सेप्ट बुझी के लेखिबा पई काइना घोसिले बिल्कुल किछि भी जिंस मन रहिबोनी एग्जाम को जाके आ करके ऊपर को चाहि के बसिथिबे किछि गोटे लाइन भी मन पड़िबोनी सो हेडिंग भल से पढंतु प्रैक्टिस करंतु बढ़िया से हेडिंग प्रैक्टिस करंतु डायग्राम प्रैक्टिस करंतु हेडिंग रे ही क्वेश्चन ना रे ही तार संपूर्ण आंसर लुचिकी रहिछि कॉन्सेप्ट बुझिबा को ट्राई करंतु बुक्स रोचे सीबीसीएस बुक्स रोचे प्लीज समस्त सीबीसीएस बुक को फॉलो करंतु ता देहर पूरा प्रॉपर नोट हेके रोचे सीबीसीएस बुक रे एंड यस नोट पई मो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु पीएम बाय पैशन एकेडमी ऑलरेडी मो नोट्स अवेलेबल कर देछि सो जदि आज रो वीडियो भल लागि छि हेल्पफुल रहि छि त प्लीज लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु एंड यस जेते पारचंती शेयर करंतु नेक्स्ट वीडियो रे मु कोर 9 न सिलेक्शन क्वेश्चन नै के आसीबे आज ही सब किछि कहि देथांते किंतु जदि वीडियो बहुत लॉन्ग हे जाउछि सेति पई आज ये वीडियो को एठी एंड करूछि नेक्स्ट वीडियो रे कोर 9 रो सिलेक्शन क्वेश्चन कहबी एंड कोर 10 न सिलेक्शन क्वेश्चन कहबी सेते पन वीडियो देखु थांतु एंड मते सपोर्ट करू थांतु थैंक यू।